Delightful catfish. God bless you. Jai Jagannath, hello friends. This is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Pile English ro class kariba boli mu कहइतरी तुमको. So as per the commitment, class number 3 रे अछि English रो दुईटा selection passage. कोडा chapter होछि money madness रो पाखापाखि 20 टा प्रश्न हम आलोचना करिबा ए सेशन रे. ओके. तो जो माने जॉइन करछे फटाफट संग मान के सहित शेयर करबा जाफल से माने भी जॉइन करिवे. आउ समस्ते उत्तर दवा भूल हो ठीक हो पिले उत्तर दवा पे चेष्टा करिबा. ओके कारण उत्तर देले हम जानि परिबा हम केते कहूचे ठीक केते भूल कहूचे तेनु उत्तर लिखिबा पे निश्चित भाबे टाइप करिबा. ओके तो सीधा जीवा देखिबा कोन रहिछि प्रश्न गुडी को चैप्टर होछि मनी मैडनेस. तो पिले प्रश्न प्रथम प्रश्न रहिछि व्हाट डज द पोएट डाउट. व्हाट डज द पोएट डाउट कोन संदेह करूतले. ऑप्शन बी. Question number 2, how does a man behave when he parts with a 10 pound note. गोटे 10 pound note जेतेबेले जने लोक हजै दिए तार बिहेवियर कोन रहे. Question number 3, how does a person feel when he parts with a how does a person feel when he parts with a 10 pound note. कोन अनुभव करे. Question number 4, each person has a degree of madness for money. Quote the line to justify. कोन से degree of madness ता. Our question number 5 होजी account for the poet's frequent reference to quail. Quail को नहीं कि कभी कहीं की एते थर रेफर करचंते से विषय भी कुआ. आउ जो पांचटा प्रश्न रहला से गुडी कहूची how do you feel before money. टंका पूर्वरु हम केमती माने टंका सामने रे हम केमती अनुभव करू. तापर नंबर 2 होची what is the difference between the money madness and mankind and individual. money madness of mankind and an individual. जने लोक एवं पैसा पागल समाज. Question number 3, what are we really afraid of. Actually हम कहा को डरुचे. Question number 4 होला what do people say about a man's worth. लोकर औकात विषय वैल्यू विषय लोक माने कोन कहमती. एवं how do money made men treat the men without money. How do money made men treat the men without money. बिना पैसा थिबा लोक पैसा नथिबा लोक एवं पैसा थिला लोक एमान के भीतर संपर्क कोन केभली माने ट्रीट करनथि. ओके तो प्रथम प्रश्न देखिबा व्हाट डज द पोएट से डाउट. कोन डाउट करचंते बिले व्हाट डज द पोएट डाउट. कवि को जिंसटा को डाउट करचंते. द पोएट डाउट्स इफ एनी मैन पार्ट्स विथ अ पाउंड नोट विदाउट ग्रेट पेन. So the poet doubt if any man part with the pound note without pain. नहीं English selection already दिया है शिवानी मिश्रा. परवर्ती प्रश्न question number 2, how does a man behave when he parts with a 10 pound note. गोटे मनीष केमती व्यवहार करे जेतेबेले तार $10 नोट 10 पाउंड नोट गोटे हजि जाए कोन हुए. Any man parts with a 10 pound note feel a real shock. Yes or no? Next question होची how does a person feel when he parts with a 10 pound note. 10 pound note जब हजे कौन फील करे actually. A person feels a sudden feeling of pain. A person feels a sudden feeling of pain when he parts with a 10 pound note. माने हठात ता भीतर एक जंत्रणा सृष्टि हुए जब तार 10 pound note हजे जाए. परवर्ती प्रश्न होची each person has a degree of madness for money. Quote the line to justify it. प्रत्येक लोकर एक डिग्री अलग अलग अछि को लाइन सेटा जस्टिफाई करूची. सो एटी को लाइन पिले the individual carries his own grain of insanity around with him. ए लाइन ता जस्टिफाई करूची. लास्ट क्वेश्चन दिला account for the poet's frequent reference to quail. quail शब्दटा कवि काहे कि बारंबार व्यवहार करचंते से विषय लेख. तो कौन पिले the poet's frequent repetition of quail throws light on the fact how money evokes a terrible fear in the mind of human beings. कौन the poet's frequent repetition of quail throws light on the fact how money evokes a terrible fear in the mind and human beings. मनीष एवं मनीषर मस्तिष्क उपरे ए जो डरर प्रभावटा केमते पड़े से विषय को उपस्थापन करिवा पई कवि बारंबार क्वाइल शब्दटा को व्यवहार करचंते. आउ जो पांचटा प्रश्न थिला से प्रश्न पांचटा प्रश्न हम कहि दोची. प्रश्न थिला हाउ डू वी फील बिफोर मनी और हाउ डू वी फीलिंग बिफोर मनी.
So we fling before money in a strong unusual feeling of fear. बुझेला fling feel ଆଉ sting ए दुईटा शब्द मिसिके fling ହେଇଛି. So how do we fling before money एटा लेखा गला. So we fling before money in a strong unusual feeling of fear. Unusual fear आसे हम भितरे हैं गोटे जोड़ा आसीबा कथा न से भलिया डर आसे हम भितरे. Next question होची what is the difference between the money madness and mankind and an individual? A terror, yes beta. So what is the difference between the money madness of mankind and an individual? जने व्यक्ति एवं गोटे गोष्ठी रो भितरे डिफरेंस कोन माने जते बेले गोटे गोष्ठी पागल हो पैसा पाई एवं जने व्यक्ति पागल हुए पैसा पाई दुईटा भितरे डिफरेंस कोन. So the difference exactly the difference between the money madness of mankind and an individual that mankind thrills under money madness whereas an individual has his own degree of madness about it. तो कौन हुए mankind reels under money madness प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जाति पैसा पत्र पागल ये सुनो whereas an individual has own degree मनुष्य जाति समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान माने पैसा रो दरकार अछि समस्त पैसा ପାଇଁ पागल but individual मानकर कौन हुए it differs from individual to individual समस्तଙ୍କ डिग्री अलग अलग थाए. Next question. What are we really afraid of? What are we really afraid of? If the mankind mad for money, the individual is bound to gain its own grain of insanity. Next question होची what are we really afraid of? Actually हम काकू डर जे we really dread mankind's collective madness for money. We really dread the money mad mankind and exactly the collective madness of mankind. समस्तंकर पागल आमी को आमे डरू पैसा को आमे डरू नाउ. परवर्ती प्रश्न होची what do people say about man's worth? We really afraid of the money made people. Yeah. So what do people say about the man's worth? गोटे लोकर मूल्य को नहीं की वैल्यू को नहीं की लोक माने कोन कहंते. According to the poet, we are not afraid of money. Sorry. As to man's worth, people say, how much is he worth? Is he no money? Let him eat that. Google. Yes or no? Next question. You know, how do money-made men treat the men without money? How do money-made men treat the men without money? पैसा पचरे पागल लोको will eat that. प्रलिप्ता, sorry. Okay. तो question तो थिला कौन पिले? How do money-made men treat the men without money? बिना पैसा लोको कौन केमती ट्रीट करंती पिले? The money mad men treat the men without money with contempt, निंदा करंती. They make them accept an insult by saying let them eat that. A man possess that evaluated his worth in the society. Arab. परवर्ती पैसेज टा होचे बिले कोन we quail money makes us quail to आरंभ करी it is fear of my money made fellow man पर्यंत. Okay. प्रथम प्रश्न what does mankind say with one voice? First प्रश्न what does mankind say with one voice? Question number 2 what does mankind say unanimously? Then question number 3 होची what do people say about money's worth? Money's worth. Question number 4 then let him eat that what does him refers to. Question number 5 then let him eat that Google what does the expression Google mean. Okay ए पांचटा प्रश्न. प्रथम प्रश्न थिला what does mankind say with one voice? एक स्वर रे मनुष्य जाति कोन कहे ये होची प्रश्न पिले कोन कहे mankind says with one voice what worth the man is in terms of wealth. What worth the man is in terms of wealth ये पचारंती. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज मैनकाइंड से यूनानिमसली एक स्वर रे प्रत्येक मनुष्य कोन कहंते पिले. मैनकाइंड सेज यूनानिमसली हाउ मच वर्थ इज ए मैन in terms of only money पैसा को भित्ति करिकी तार वैल्यू विषय रे सेमाने पचारंते नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू पीपल से अबाउट मनी's worth? मनी's worth टंकार मूल्य विषय लोक कौन कहते. टंकार मूल्य विषय लोक कौन कहते बोले
The word, people say how much money a man possesses that evaluated his worth in the society. जे तार से ता पाखरे केते पैसा अछि से पैसा हिसाब रे तार वैल्यूटा समाज निर्णय करि थाए. Next question होची then let him eat that. What does him refers to? It is him कहा पाई व्यवहार करा जायछि. The word him refers to a poor man. जने गरीब लोक ये सर poor man गरीब लोक विषय रेफर करा जायछि. और शेष प्रश्न होची then let him eat that and go cold. What does the expression go cold means? What does the expression go cold means? It go cold कहले कोन पिले go cold बोली काहे कोआ जायछि. The expression go cold means that the poor man should live in a state of suffering. एक जंत्रणादायक जीवन से जीव state of suffering रे से रहिबो बोली की कोआ जायछि. The poor man should live in a state of suffering. Very good. तो ये थिला पिले हमरो दुईटा पैसेज रो पाका पाकी 15 रु ऊर्ध्व प्रश्न आलोचना कले हमें. परवर्ती क्लास साइंस पिलांकर आज हबो आई थिंक बायोलॉजी क्लास. साइंस पिलांकर बायोलॉजी क्लास तो 8:45 बेले सी यू देयर. स्टे ट्यून मास्टर ऑफ इंग्लिश. जय जगन्नाथ.